here. The stream is called Coffee and Cricket with me, Jamie. Once again, I've got my favorite coffee mug from the lovely people at Coffee Culture, भीलवाड़ा, राजस्थान. शुरू करते हैं प्रोग्राम कार्यक्रम एक सिप कॉफी के साथ. हम्म, हम्म. कॉफी है, मैं हूं, आप लोग हैं और खूब सारी क्रिकेट की बातें हैं हमारे साथ आज. Well, दोस्तों, we got some early subscribers saying hello here. Good morning, says Shikhar Singh. Good morning to you, brother. Jay Narayan is saying, Good morning, Jamie, sir. शुक्रिया भाई आपने मुझे सर कहा. Hope you're doing well. I'm fine, Jay Narayan, my friend. How are you? Fingers crossed for Bumrah, says Shikhar Singh. Hope BCCI aren't making the same mistake as last year and he's being brought back with 100% fitness. बिल्कुल सही बात कहा दोस्त आपने. उम्मीद करते हैं कि इस बार ऐसी कोई गलती नहीं होगी बीसीसीआई से और जसप्रीत बुमराह बिल्कुल पूरी तरह से फिट है. नॉट जस्ट physically fit as in having ticked all the boxes, but match fit. Not just I'm talking about gently running up and bowling 4 overs against Ireland in what's going to be a rather rain-hit soggy series, but bowling in one-day matches. चलिए 10 ओवर शायद ये नहीं डाल पाएंगे डायरेक्ट वापसी करके, बट 7-8 ओवर तो जरूर करने पड़ेंगे उन्हें एशिया कप में अगर जो बात वहां तक जाती है. उम्मीद करते हैं कि जसप्रीत बुमराह पूरी तरह से फिट हैं, तंदुरुस्त हैं and raring to go. Nihar is saying, Hello, Jamie. How are you? I'm very fine, Nihar. Good to have you back on the stream. आपने अगर थंबनेल देखा तो आज हम बात करेंगे आज शाम को जो तीसरा वनडे है इंडिया वेस्ट इंडीज के बीच, उसके बारे में हम कुछ बात करेंगे. I'll share my views on whether I think India will or will not go for that experimenting again. We'll talk about, of course, the new T20I squad that was named last night. काफी नए चेहरे हैं, अनकैप्ड प्लेयर्स हैं और ऑफ कोर्स बुमराह की वापसी है, उसके बारे में बात करेंगे. फिर हम एशेज के बारे में बात करेंगे. बेहतरीन एक चौथा पांचवा टेस्ट मैच रहा, सॉरी, at the Oval where Stuart Broad signed off his extraordinary, legendary test career with 2 wickets. उनकी आखिरी गेंद जो थी जब वो बैटिंग कर रहे थे इंग्लैंड की दूसरी पारी में, the last ball he faced in Test cricket, he hit a six, and the last ball he bowled in Test cricket, he got a wicket to take his tally to 604 Test wickets. Only two fast bowlers इस महान खेल के इतिहास में 600 विकेट पार कर चुके हैं. एक है स्टुअर्ट ब्रॉड जिन्होंने 604 विकेट अपने नाम करके कल नॉट जस्ट अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट, पूरे डोमेस्टिक एनी काइंड ऑफ क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया. और जो दूसरे शख्स हैं जिनके पास 600 से अधिक विकेट हैं वो हैं ब्रॉड के लॉन्ग टाइम न्यू बॉल पार्टनर जेम्स एंडरसन, जो कि 41 के एज में अभी भी खेलने के लिए तैयार है. अतुल बुल्ला, गुड मॉर्निंग, थैंक यू, गुड टू सी यू. क्रिक मेनिया, वेलकम बैक माय फ्रेंड क्रिक मेनिया. तो चलिए सवालों जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं. मासूम है सेइंग माय फेवरेट टीम इंग्लिश टीम. वेल योर टीम got it 2-2. Good morning, Shahnawaz. Is Virat Kohli and Rohit Sharma going to play today? सभी के लबों पे, सभी के दिमाग में शायद ये सवाल है. मेरा ये कहना है, अब जो रायता फैलाया है टीम मैनेजमेंट ने एक्सपेरिमेंट के नाम पे, अब अगर ये रोहित शर्मा और विराट कोहली को खिलाते हैं, A, it'll be acceptance that we blundered, and B, it'll go against the very statements that Rahul Dravid has been getting for 2 matches. So, to answer your question, शाहनवाज भाई, मेरे हिसाब से नहीं खेलना चाहिए, नहीं खिलाना चाहिए विराट कोहली और रोहित शर्मा को, क्योंकि इसके करने से आपको एक्सेप्ट, आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि हमसे बहुत बहुत बड़ी गलती हुई. और दूसरा बात, ये जो एक्सपेरिमेंट है ये तो हुआ था, ये तो हमने ऐसे ही कहा, इफ दे प्ले. सो टू माय माइंड neither Rohit Sharma nor Virat Kohli comes back because Indian team management has shot itself in the foot by rejigging the batting lineup in that first match, and then the second match again rejigging but also putting out of the team रोहित शर्मा एंड विराट कोहली, ये कहकर राहुल द्रविड़ द्वारा कि हमें तो पता है कि ये क्या करेंगे, इनकी बैटिंग देख के हमें कोई जवाब नहीं मिलेंगे. तो इसी स्टेटमेंट को बैक करके अगर जो द्रविड़ साहब, अगर जो असल में आप ये मानते हैं जो आपने कहा दूसरे मैच के बाद, फिर तो रोहित शर्मा और राहुल और विराट कोहली को बाहर रखे इस मैच के लिए. Ashutosh, no justification of playing Kohli and Rohit if Rahul Dravid is not found. Answer to his questions. Absolutely, I just said that. Wrongman Jajabor, good morning, brother. Welcome back, my friends. How are you feeling? कल के मैच, आज का मैच सॉरी, उसके बारे में क्या ख्याल है? मैं तो अपने व्यूज सामने रख चुका हूं. अब वही 11 खिलाओ जो तुम अब तक खिलाते आए हो, यानी कि पिछले मैच में ईशान किशन से ओपनिंग कराइए, गिल से ओपनिंग कराइए, स्काई को 3 पे खिलाइए या शायद स्काई को 6 पे खिलाइए. अब Nihar, I think, like I just said, they have left themselves in a very awkward position of now having to play the same team as the last match. Because
अक्षर पटेल को आपने 4 पे बैटिंग कराई, चलिए उनको बेहतरीन गेंद मिली, खेल नहीं पाए। अगर उस दिन वो 65 मारते, 86 मारते, 100 मारते, क्या आप उनको 4 पे खिलाते वर्ल्ड कप में? नहीं। तो दिस एक्सपेरिमेंट वाला लाइन मेरे हिसाब से ये सब बकवास है। आई थिंक दिस टीम रियली डज नॉट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। आई डू नॉट नीड टू लुक टू फॉर इनटू राहुल द्रविड्स लीडरशिप एक्सपीरियंस, हालांकि वो मेरे सबसे प्रेमी, सबसे प्रिय, सबसे फेवरेट प्लेयर थे एज अ बैट्समैन, but as a tactician, I was not a fan of his captaincy when he was briefly the captain for a couple of years. And as a coach, he's also shown to be somewhat confused. आपको याद होगा 2007 वर्ल्ड कप से पहले ग्रेग चैपल के साथ बड़ी अच्छी प्लानिंग, सीनियर्स जूनियर्स, एक अच्छा ब्लेंड मिक्स करके टीम वहां भेजी गई थी। टीम का जो बिल्डअप था 7-8 महीने पहले 2007 वर्ल्ड कप से, इरफान पठान 3 पे आते थे, सचिन ओपनिंग करते थे, सहवाग ओपनिंग करते थे। वर्ल्ड कप में क्या किया राहुल द्रविड़ ने? सचिन को 4 पे खिलाया, सहवाग को 3 पे खिलाया, इरफान पठान को नीचे 7-8 किया। सो दिस कंफ्यूज थिंकिंग ऑफ राहुल द्रविड़ ये 2007 से चल रहा है जब वो कप्तान थे। तो आई एम नॉट सरप्राइज दैट वंस अगेन 2 months before a World Cup, there's captaincy and tactical blunders being done under Rahul Dravid's supervision. Shikhar, Kohli and Rohit shouldn't play today. Absolutely, I've said that. Never had I thought experiments would be still going on 3 months. Not 3 months, my friend, 2 months. 3 महीने हो गए, अब 2 महीने बाकी है. Why India is not able to make perfect 11? अमित रंजन, बहुत सही सवाल आपने यहाँ उठाया है। बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हयात लेके आए हैं इस शो पर। इट्स बिकॉज दे आर कंफ्यूज। रोहित शर्मा इज टू चलता है कैप्टनसी, एंड आई एम श्योर ऐसा हुआ होगा। सुन यार, जाएगा 4 पे आज, चल चल जा जा, अपन नीचे आते हैं 7-8। This is probably the way he thinks. And Rahul Dravid, who tactically has made enough blunders as a captain and coach, they're just not thinking. हाँ, इनको पता था कि भाई कुछ हमारे खास प्लेयर्स इंजर्ड है, लेकिन आप अब तक क्यों वेट कर रहे हैं? मेरे हिसाब से the decisions being taken in the West Indies is India's way of accepting कि भाई बुमराह, राहुल और अय्यर शायद वापस नहीं आएंगे इस बार. I think it's acceptance. Very late, it must be said. Atul Power, welcome back. Lord Wokes the difference between the two teams. He took wickets and crucial runs. बिल्कुल, they should have played. They should have played 19 wickets in 3 test matches. जब से क्रिस वोक्स 11 में आए हैं, इंग्लैंड टीम एक भी मैच नहीं हारी. But I still say, even had he played, it was not about Wokes. England dropped 11 catches in those first 2 test matches. आप 11 कैच छोड़ेंगे, आप नो बॉल डालेंगे, आप खराब बैटिंग करोगे तो आपके मैचेस जीतने के chances कम ही है. Yes, Chris Wokes should have played, but he wouldn't have made a big difference because in that match, England's batting was confused and their fielding was really, really bad. Rahul Dravid was never a good coach, mentor for the Rajasthan Royals and Delhi Daredevils. Agreed. And India 19 and 18 were outliers. Yes, absolutely. I've said this before. It's all very good to judge a coach's success when you're dealing with teenagers. The moment you deal with players who are bigger than you in status, I'm talking about Virat Kohli, Rohit Sharma, some of you played with, it becomes very, very tricky, very, very awkward to handle them. But Rahul Dravid क्या बैटिंग सिखाएंगे विराट कोहली को, रोहित शर्मा को? नहीं सिखा पाएंगे ना. The role becomes very, very different, very defined. Something like रवि शास्त्री कोच नहीं थे. रवि शास्त्री एक मैन मैनेजर थे, वो एक पर्सनल मैनेजर थे, वो एक ईगो मसाजर थे, वो एक चीयर लीडर थे. एंड आई एम सेइंग दिस विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट. ही न्यू हाउ टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ अ प्लेयर. We all laugh and joke about शास्त्री, पर उनका काम वही था ना, प्लेयर को बोलना कि भाई तू बेस्ट है, जाके फाड़ दियो आज. Like him telling Shardul, him telling Siraj, him telling Washington Sundar in Australia when the team was broken heading into that final test match कि तुम लोग यहाँ रन बनाओगे, यहाँ विकेट लोगे, यहाँ जीतोगे, दुनिया तुमको सलाम ठोकती है. आपको ऐसी मोटिवेशन स्पीच की जरूरत है, ना कि टेक्निकल कुछ skills. That's just my very, very basic reading of the situation. Do you think Sanju Samson's inclusion in T20 against Ireland indicates that he won't be a part of Asia and World Cup squad? I don't know. I think he's just too good a player to leave out, especially if the team has doubts over KL Rahul's participation and fitness. Because when you're talking about KL Rahul को दो नजरिए से देखना पड़ेगा. एक KL Rahul द बैट्समैन, अगर वो आते भी हैं तो अगर वो सिर्फ एज ए बैट्समैन के तौर पे खेलते हैं, ये मानता हूं मैं, ये हो सकता है. लेकिन एज अ कीपर बैट्समैन 5 महीने के लिए बंदे ने बल्ला नहीं उठाया. वो इंजर्ड रह चुके हैं 4 महीने जो भी था. 4 महीने के ब्रेक के बाद आप उन्हें बैटिंग भी दोगे, कीपिंग भी दोगे, वो भी एक वर्ल्ड कप में. मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही फूलिश, बहुत ही रिस्की सिचुएशन है. तो भले ही आप केएल राहुल द बैट्समैन को लाओ, लेकिन आपको फिर भी उनके अलावा आपको 2 कीपर बैट्समैन चाहिए, और फिलहाल सैमसन और ईशान किशन से अच्छा कोई है नहीं. तो आई थिंक सैमसन विल डेफिनेटली बी अ पार्ट ऑफ इंडियाज वर्ल्ड कप डिस्कशंस unless KL Rahul comes back and proves that he can keep wickets. Samson should be part of India's World Cup squad as well. Hi, Janmesh.
ड्रीम 11 पे टीम बनाकर प्लेइंग 11 नहीं बना जा होता है भाई, होता है ये सब ड्रामा. Navjot Paji is back playing the devil's advocate, Jay bhai. Isn't it good that we can test and give exposure to new or on-bench team player as in Asia Cup pressure will be high? I understand कि आप कहाँ से आ रहे हो. Asia Cup pressure won't be that high. The असली pressure, like we all know, is in the World Cup. ये टीम जहां भी जाएगी World Cup से पहले, World Cup के बीच, uh, from airports to hospitality suites to hotel lobbies to the concierge to the bellboy, ये टीम जहां भी जाएगी, इनके ऊपर जो दबाव आएगा इन लोगों से वर्ल्ड कप जीतने के लिए, वो अलग प्रेशर. आई डोंट थिंक द एशिया कप वुड बी मच प्रेशर. बट अगेन, यू आर टॉकिंग अबाउट टेस्ट एंड एक्सपोजर टू न्यू और ऑन बेंच प्लेयर्स. न्यू प्लेयर्स तो है ही नहीं. मुकेश कुमार न्यू है, लेकिन मुकेश कुमार आपके वर्ल्ड कप प्लान्स में नहीं है. देयर इज नो न्यू प्लेयर. इंडियाज वर्ल्ड कप स्क्वाड वाज ऑलवेज गोइंग टू बी मेड अप ऑफ प्लेयर्स who for the past 10, 12 months have been playing one day cricket. Hence, we cannot talk about new players because no new players. Jaiswal is not going to come into India's World Cup squad. World Cup squad will be picked up the consistent players from the last 10 months. अब on bench players की बात मैं यहाँ पे भी आपको समझाता हूँ. On bench is someone like Akshay Patel. Akshay Patel does not get chances when Jaddu's around. But in the last 15 one days, Akshay Patel has very good stats. So the team already understands what what Akshay Patel has to offer. There's no point trying to see what he does at number 4 because he's not going to bat at 4. And he's such an experienced player. He's such a skilled player that when you've been one of India's leading all-rounders across formats for the last two years, you don't need to be tested. हाँ भले आप on bench पे बैठे हो, but it's not like you're a newbie, you're a rookie. You've got enough experience. So I just don't understand this kind of experimenting or this testing. How are you testing them? The only player that's being tested is Mukesh Kumar because he's never played this format. Umran Malik has still played a small amount. Shubman Gill has played plenty of ODIs. Shardul Thakur's been around for 3 format player. So there's no player in this current ODI squad, barring Mukesh Kumar, that needs to be tested. So I just don't understand why the team is doing all this drama in the West Indies. Tarun T is saying, one second, speaking of tea, let me have my coffee. Selections we are rightly discussing, but what about the adjustment of game to game? Game to ODI format before biggest ODI tournament. When was our death bowling tested in ODIs? See, the team has been playing enough ODIs. I go back to what I've been saying on this live stream for the past few days. You had 3 ODIs that followed 3 ODIs in New Zealand. Okay, so you played 3 ODIs in New Zealand, then you went to Bangladesh, you played 3 ODIs. That was 6 ODIs in the span of a few weeks. Then you came home this year. You played Sri Lanka, you played New Zealand, you played Australia. So you had, what is that? That's 18 ODIs in the span of roughly 2 months. That's plenty of time to test your death bowling. पर वहां पे आपने लोग को रेस्ट दिया, बुमराह नहीं थे. Now you have 3 ODIs in the West Indies. This was not a time to test your death bowling or to test your players. This was a time to lock in what is the closest you can get to your playing 11, your first choice 11. Given the fact that बुमराह नहीं है, अय्यर नहीं है, राहुल नहीं है, फिर भी क्या मुकेश कुमार आपका वर्ल्ड कप मैच शुरू करेंगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेन्नई में? हरगिज नहीं. क्या सूर्य कुमार यादव वो मैच खेलेंगे? हरगिज नहीं. क्या वो खेल के 3 पे खेलेंगे? नहीं. 3 पे विराट कोहली आएंगे. क्या शार्दुल ठाकुर 6 पे खेलेंगे? नहीं. So what was the thinking? I don't buy this experimenting, testing bench strength. This is not the time. If you're testing bench strength, that should have been done in Bangladesh. No team, mark my words, no team 2 months before a West Indies team starts to test bench players' strength. नहीं होता. राहुल द्रविड़ ने जो भी कहा परसों, it was sheer bollocks. It was an excuse. ऐसा कुछ नहीं है. मेरा ये मानना है कि वो खुद नहीं मानते कि जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया उनमें 100% सच्चाई है. It was more of an escapist answer. It was acceptance very very late in the day कि हाँ भाई शायद ये 3 वापस नहीं आएंगे. So I'm not buying all this testing out things and all. If you want to test out, the last series for you to test out should have been the Australia 1 day before the IPL, not now. Hello, Shanak, how are you? Good morning, Vicky. Ashla saying reading Osman Samiuddin's book on park cricket. That's a good book. And Anderson definitely behaving like some great park cricketers of past years. Pushing the limits. Atul is saying Australia already started mapping the 11 for the World Cup and New Zealand series on last September. They prepared slow pitch for that series. There you go. ऐसे fan को सब पता है. Justice for folks. England have to play when they come to India. As keeping in subcontinent is not easy. See, folks का एक ही problem अतुल. Folks England के बाहर कुछ नहीं कर सकते. वो बहुत ही खराब प्लेयर है इंग्लैंड के बाहर. And he knows that. The team management knows that. Folks is not going to play in India. His bowling just does not work outside. He's one of those, way more than Stuart Broad,
वो एक ऐसे बॉलर है, उनको ऐसी कंडीशंस चाहिए और इंडिया में इनको कंडीशन नहीं नहीं मिलेंगे। इनको पांचों मैच में पाटा स्पिनिंग ट्रैक्स मिलेंगे। ही माइट प्ले स्पिन बट when the main batsman came apart against India 2 years ago in the same condition, I don't think Wokes. So frankly, I don't think Wokes is going to play any of the 5 Test matches. These conditions are not made for him. Like Stuart Broad has a terrible record in India, Wokes is going to also be a big flop show if he plays here. Why team management is not being consistent with team giving rest to players? भाई ये तो सदियों से चलते आ रहा है, but इस मैनेजमेंट के अंदर ये बहुत ही ज्यादा हो रहा है. About death bowling, I meant the bowling unit which will likely play in the 11. Correct, correct. That's what I'm saying. Five T20. Seriously, Dr. Saab, exactly. Not playing five T20 series in T20 World Cup year and doing that in ODI World Cup year. What are the people thinking? Well, I don't need to explain to you that this is the weakest BCCI in the history of BCCIs. Not weak financially. Financially, तो ये तो पैसे ये तो अरबों करोड़ डाल रहे हैं अपने खाते में. They've gone to the ICC saying that we want a jump from 22% to 40%. But tactically, on accountability, on logic, on logistics, this is the weakest BCCI. So can you expect them for wanting to play five T20Is? अरे नंबर वन टीम है हमारी यार, नंबर वन T20 रैंकिंग है. आप लोग बोल रहे हो हम एशिया कप फाइनल तक तो नहीं पहुंचे, हम T20 वर्ल्ड कप से ऐसे धोके बाहर निकले हैं शर्मिंदा होके, बट अपनी रैंकिंग तो नंबर वन है बॉस. तो खेलो घटिया वेस्ट इंडीज से 5 मैचेस. Shikhar, Dravid always been my favorite batsman ahead of even Sachin. Same here. But this is too confusing. He should have stayed at NCA. Maybe he's homesick. Maybe. I was talking about Folks, the keeper, not. अच्छा आपने Folks कहा था. Sorry. I read Wokes क्योंकि आपका पिछला comment Wokes था. हाँ, Folks. Correct. No, Folks absolutely. Folks definitely should play. Johnny Bairstow जब इंग्लैंड में मोइन अली की गेंद पे कैचेस छोड़ रहे हैं तो भैया स्पिनिंग ट्रैक्स पे तो नहीं कर पाएंगे. Folks, बिल्कुल Folks. Nice one. Talking of tea, let me pick my coffee. Thank you. I'm here for cricket. So are you doing any more OTT stuff related to cricket? No. My OTT is, I love my OTT experience because it gets me away from cricket. I talk about cricket far too much. The last 3.5, 4 years, in fact, that I've tried acting, it's such a relief because मैं बहुत ही creative पर्सन हूँ और जो मुझे चाहे एक दिन की शूटिंग हो या 2 दिन की शूटिंग, जो मुझे एक ब्रेक मिलता है क्रिकेट से ना भैया, बहुत बहुत मजा आता है. कल जो मेरी नेटफ्लिक्स फिल्म आने वाली है नवंबर में, कल उसकी एक सीन उन्होंने ऐड किया था 1-2 महीने पहले. तो कल यहाँ दिल्ली में वसंत विहार में आई गॉन टू अ डबिंग स्टूडियो एंड द guy in the studio, he happened to be a big cricket fan. So the moment he heard about me being a cricket journalist, he's like, and this is just about the time the dubbing was starting. He wanted to talk about cricket. मैंने कहा भाई यही तो मौका मिलता है मुझे क्रिकेट से दूर होने का और मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि जब भी मैं डबिंग करता हूँ या एक्टिंग करता हूँ तो हम क्रिकेट की बातें नहीं करते. And that poor guy just wanted to talk cricket. So yes, my OTT has nothing to do with cricket and I hope it stays that way. Shouldn't we have Arshdeep in one day World Cup pick up things? We should, but in his 2 year career, if you've only given him 2 ODIs, the team doesn't think he's an ODI player. We're not lacking talent, we're lacking good cricketing brains and management. बिल्कुल सही कहा आपने. Ankur is saying, Bhai, if Shreyas not in time, whom do you see at number 4 for World Cup? Knowing this team, they'll go for Ishan Kishan. But I would rather see Hardik Pandya or Samson. But मैं कौन हूँ? The team will definitely bat Ishan Kishan. Shubhdeep saying India were not in the best form and were thrashed by New Zealand before the 2003 World Cup. कहाँ 20 साल पहले की बात ले रहे हो भाई आप? Probably losing to West Indies would be a good thing, would keep their feet grounded. I get Subhajit where you're coming from, but you have no business losing to a team that didn't qualify for the World Cup. This is embarrassing. You should not be losing. So let's hope that they don't lose and they get their act together and start playing better cricket. Good morning, Prabhakar. When your captain starts to take regular rests after being given permanent captaincy, that trickles down to other players. बिल्कुल सही कहा आपने. Rohit Sharma has probably skipped more matches than he's played as captain. If Shreyas not fit and Sanju not performing, I just said I would like to see Hardik Pandya. If he's not bowling 10 overs, bat at 4. I think he could be a very, very good 4 for the World Cup. I think Samson's the best option, but I know the answer from the team perspective is going to be Mumbai Indians Ishan Kishan. Pranav, Sanju should have been made the vice captain at Ruturaj. Yeah, I guess. I mean, that's debatable. Also hoping he plays today. I hope Sanju plays. I think he will play. I don't think they're going to make any changes
and Samson needs to cash in big time. I think India is not a team which can handle the knockout pressure. I think 12 साल इस बात का गवाह है ना दोस्त. Have you tried Israeli coffee? No, I have not, Atul Power. Please suggest something. Brickmania कह रहे हैं, what's your thoughts behind having a fragile player like Bumrah to play and captain T20Is in a 50 overs? बिल्कुल, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ इस प्लेटफॉर्म पर, और जो मैं जहां पे जाता हूँ हर दिन न्यूज 9 लाइव पर और क्रिकेट नेक्स्ट पर. एक सेकंड, फिनिश द कॉफी. um Look, there's a lot of merit to say भाई कि अगर जसप्रीत बुमराह फिट है तो इनको T20 खिलाओ, 4 ओवर डालने पड़ेंगे, देखते हैं कैसा है. बट कैप्टन बनाना is quite shocking. You could have given the captaincy to anyone for three ODI, T20s in Ireland. दूसरी बात ये है कि अगस्त के महीने में दोस्तों काफी बारिश होती है आयरलैंड में, तो मोस्ट लाइकली यू गोइंग टू हैव 3 रेन हिट T20s. तो अगर जसप्रीत बुमराह को आयरलैंड जाके जहां पे बहुत ठंड होगा, ये बैंगलोर से आ रहे हैं, आप गीले ठंड मौसम में बैठेंगे, जंपर लगा के, हुडी लगाकर, ग्लव्स लगाकर, और अगर इतनी बारिश पड़ेगी जो मैं सोच रहा हूँ कि जरूर पड़ेगी, और तीनों मैच पूरे नहीं हो पाएंगे, तो आपको क्या मिलेगा? वैसे भी अगर धूप निकलती है और ये तीनों मैच खेलते हैं तो ये केवल 12 ओवर डालेंगे, बिकॉज एक T20 में आप मैक्सिमम 4 ओवर डालेंगे, वो भी आयरलैंड के अगेंस्ट. सो नेचुरली द टीम विल नॉट be taking an Ireland series very, very seriously. Plus, it's T20s in a World Cup year. I think it would have been much better to use the time that it takes to go to Ireland, to train, to play those 3 matches, and to come back. I would have much rather have Jasprit Bumrah working harder, playing more matches inside the NCA, and then going to the Asia Cup as his return series. But I think they're thinking Sri Lanka, बहुत ह्यूमिड, वहां भी बहुत बारिश पड़ती है अगस्त सितंबर के महीने में. क्या ये स्टार्ट में आके 10 ओवर फेंक पाएंगे? That's the thinking. I'm saying we're not playing a T20 World Cup 2 months from now. A combined 12 overs across 3 matches in Ireland makes no sense to me. I would much rather have him come back to the Asia Cup, play 2 of every other match, play 1 match, sit out, play 1 match, sit out, break him back in the format you're most expecting him to do well in. That is the 1 day format. That's my take on it. Is Bumrah the captain? It is certain now he will play. He has to play because I just said they want him to get back into match fitness for a 1 day tournament by playing 3 T20I. So जरूर captain ना भी होते तो जरूर वो तीनों match खेलते, because this is his comeback after 1 year. So, but I'm saying there's no point playing him in 3 ODIs in damp, cold Ireland जब World Cup India में होगा. Talking of tea, try Irani tea at Chayos Chai Point in Gurgaon. I loved it. My last. Okay, is this just the Chayos in Gurgaon, or do all Chayos have this? Because there's one right behind my house. I could go there as well instead of going all the way to Gurgaon, my friend Tarun. If Rituraj is leading India in Asian Games, then he should be captain for Ireland series. I agree with you, Aish. बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ. आशुतोष कह रहे हैं, I would have preferred if they would have sent the whole Asian Games squad to Ireland for practice because gold medal is also important. Correct, I agree. And because the Asian Games competition is so weak, you see, because the Asian Games, Ashutosh, because it clashes with the World Cup, every team that is sent there for cricket is going to be a B team, a very weakened team. But India's B team is so good because of all the players involved. Okay, this is the easiest chance to win gold. डॉक्टर परिचय सोनी कह रहे हैं मुकेश शुड हैव बीन सिलेक्टेड फॉर एशियन गेम्स एंड अर्थी फॉर वर्ल्ड कप. बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ. मेरे को भी वो माल चाहिए जो ये लोग फूकते हैं. हे, ये क्या पी रहा है? हमको दे दो ये माल. Yeah, anyways, it makes no sense. By the way, let me just read out the squad. आप लोग शायद अगर आप नहीं जानते हैं, ये है दोस्तों इंडिया का T20 स्क्वाड. वो 3 मैचेस आयरलैंड में. ठीक है, एक सेकंड मैं यहाँ पे लाता हूँ आपके लिए स्क्रीन पर. अरे कहाँ गया तू? हाँ, बुमराह कैप्टन, गायकवाड वाइस कैप्टन, यशस्वी जायसवाल के नाम के बाद आ रहे हैं तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, संजू सैमसन, जितेश शर्मा, शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर, शाहबाज अहमद, रवि बिश्नोई, प्रसिद्ध कृष्ण, I'm glad he's back, Arshdeep Singh, Mukesh Kumar, and Avesh Khan. That is the squad. What are your views on the squad, my friends? Let's take some comments on the squad. Jay Narayan keh rahe, if we have to choose between fit KL Rahul or Shreyas Iyer, who will be the choice going forward? 100% Shreyas Iyer. 100%. Ideally, Bumrah should have played. The Asia Cup is going to Ireland is a bit risky. I agree. Chalo, Atul Power, you have a great day. Have a good day in office. Thank you for joining me before going to office. I really appreciate it. You take care, my friend Atul. We'll see you soon.
Asian game squad is better than this team playing in West Indies, more balanced overall and exciting. Bilkul, Shikhar Singh. Keeping in mind next year's T20 World Cup, I agree with the youth that's been added to the Asian game squad. What's your view on the T20 squad for the newcomers? ये वही newcomers हैं जो already maximum Asian games जाएंगे ना. Rinku Singh was part of the Asian game squad. Of course, playing Ireland is a much tougher challenge. But does he fit into your first 11? I don't know. Tilak Verma was already part of the squad. He's uncapped. He's new. Jitesh Sharma's been around. This is his third squad call-up. Dubey is back. Sundar is back. Shabaz is back. Bishnoy, my favorite young spinner, he's back. Prasid Krishna is back. Arshdeep was already around. Mukesh Kumar is there, and Avish Khan is back. So the only new as an uncapped pitchers are Tilak Verma and Rinku Singh and Jitesh Sharma. Let's take these three since you asked me about the new players. Tilak Verma, I think, is a great find. He could be India's number three for the long, 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 long time. Rinku Singh, on the basis of one outstanding IPL, deserved a call up. बहुत बहुत लोग हैरान थे जब वो वेस्ट इंडीज टीम में नहीं थे. मैंने यहीं पे कहा था इस चैनल पे क्या थाम्बा थाम्बा टाइम आएगा इनका, ये एशियन गेम्स जाएंगे. तो ना ही ये एशियन गेम्स जा रहे हैं, ये आयरलैंड भी जा रहे हैं. एंड आई थिंक ही माइट गेट एटलीस्ट वन गेम इन आयरलैंड. वेरी वेरी गुड फॉर हिम. और रही बात जितेश शर्मा की, आई थिंक मोर देन इज कीपिंग, इट्स हिज फिनिशिंग स्किल्स. इंडिया नीड अ फिनिशर लाइक हिम. लेकिन जब तक संजू सैमसन है फर्स्ट चॉइस, I don't think Jitesh Sharma gets to play in Ireland. That's my take on the new players in the squad. अगर कोई जी से तो उम्मीद ही उन्होंने आती ही क्रश कर दी, लग रहा है ना भाई प्रभाकर? Why Arshdeep is not getting games? Because the team management doesn't see him as a one-day bowler. As simple as that. I think Ritu should be the captain. I agree with you. Other viewers have also said. I just wish the T20 squad isn't change, win or lose, and keep it loose. आपने loose लिखा है, loose, and keep for grooming fresh players and keep senior players in one-day team. Ideally, yes, but you know, my friend Navjot Singh Paji, it's Indian cricket. Do you think the impact player rule in IPL and Saeed Mustaq Ali would have a negative effect on our of all-rounders? No, I don't. I think it's been very effective in the IPL. It's allowed you to play your best 12, so I'm all for it. Strong, strange how the downfall and the attitude of the team post Virat's removal mirrors the downfall that came once Ganguly was removed and Dravid was roped in. We need an aggressive captain to take us out of this doldrum. I agree with you, Shubhajit. I agree with you. अवेश खान को तो एमपी टीम से भी निकाल दो. माइंडलेस स्पेस ऑलमोस्ट जीरो कंट्रोल. बाय द वे एमपी, आई अंडरस्टैंड आपकी फीलिंग्स कहाँ से आ रही है, बट आई थिंक अवेश खान वाज नॉट एज बैड एज पीपल मेड हिम आउट टू बी. मे बी गिव हिम वन मोर चांस. इनका जो पहला ट्रायल था काफी खराब था, बट उनमें इतनी काबिलियत है कि मैं उनको एक और चांस दूंगा. SS98, द व्यूअर हु ऑलवेज कम्स विद हिज बेस्ट 11, वो कह रहे हैं आयरलैंड T20s के लिए गायकवाड़, जायसवाल, तिलक, सैमसन, रिंकू, दुबे, सुंदर, बिश्नोई, बुमराह, अर्शदीप, मुकेश, ये होना चाहिए. इंटरेस्टिंग. मुकेश को छोड़ के मैं आपकी बात से सहमत हूं. मुकेश मुझे इस एज में और उस गति के लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट मुझे नहीं लगते हैं. कौन से फास्ट बॉलर उनके बदले हम खिला सकते हैं? मैं आवेश को बाहर करके मैं मुकेश आवेश को अंदर करके मैं मुकेश को बाहर करके बाकी 100% मैं आपका टीम से सहमत हूं. SS98. बाय द वे, आपका असली नाम क्या है? SS98. I think it was Chai Point in Cyber City where Irani tea. Thank you, Tarun. More than captain the mindless BCCI match needs to go as of now. कहाँ जाएंगे आप? Chronology समझिए ना, आपको जवाब खुद मिल जाएगा मेरे दोस्त. Jay Narayan saying Indian cricket on the decline. It has been since Virat Kohli was stepped down as Test captain. Winning the World Cup will make us home conditions. What about winning three outside of Asia and Australia, England, South Africa? The captaincy should change. I think the one-day captaincy, like I've been saying for weeks now, it will change post the World Cup final on November 29th, irrespective of what happens with the Indian team. Rohit Sharma and Virat Kohli are not playing T20s anymore. Hardik Pandya is now the official T20 captain. He should, unless Shreyas Iyer proves himself in the World Cup. One of these two will definitely take over the one-day captaincy after the World Cup, and Rohit will probably lead until the final of the next year, the next cycle of the WTC. उसके बाद आपको change की तो सख्त जरूरत है. Why not you cover other nation cricket like Oz and England? क्या बात कर रहे हो? I do a whole Ashes podcast with an English journalist and a British journalist. We've done 5 Ashes podcasts. I guess you missed them. There are many shows that I've covered of other cricket. I've done women's cricket. I've done a lot of it. But आप में से maximum viewers चाहते हैं कि मैं केवल Indian cricket पे बात करूं. तो मैं वही करता हूं. But I've done every single cricket team. I've done minnows.
I've done Ranji, I've done shows on domestic, बहुत कुछ मैं कर चुका हूँ. आपने देखा नहीं होगा श्रीमोई. The way Umran is given just 3 to 4 overs in ODIs, it doesn't mean that they might be thinking for the World Cup. I still think Ayush that he's in the World Cup fray, but the fact that he's not going to Ireland and Asian Games means that he's definitely in the World Cup squad, to my mind. Any update on Sarfaraz? अपडेट तो नहीं है अभी वो खेल रहे हैं दियोदर ट्रॉफी खेल रहे हैं बाकी कोई अपडेट तो है नहीं because he's playing. I think the update would be if he's injured or something. I think that's what you're asking. Sky's been playing red ball and white ball. Why is he struggling in a test? It's because he's played so much T20 cricket, Nihar, and he's done so outstandingly well that he's unable to decide what is the need of the hour. First of all, he's never a number three. He should be batting at number six and only number six. Suryakumar Yadav's job is to come out and in a short span of time get maximum runs. He needs about 12 to 15 overs to bat maximum. आप उन्हें 3 पे भेज रहे हैं. एक जो एक एक कला होती है इनिंग्स बिल्ड करने की वो मेरे ख्याल से वो भूल चुके क्योंकि T20 में पहली बॉल को वो पीछे मार रहे हैं. वनडे में ये चलता नहीं है ना. कितनी बार वनडे में पहली बॉल पे आके उन्होंने शॉट लगाया. वनडे में खासकर मुश्किल पिचेस में जैसे कि हमने वेस्ट इंडीज में देखा है you need to apply yourself. Both times he played bad shots. He's played 25 ODI matches जो कि मेरा मानना है बहुत बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है किसी भी प्लेयर के लिए और 25 मैच में उनके पास केवल 250 है. 17 पारियां हो चुके हैं कि सूर्य कुमार यादव ने वनडे में एक 50 लगाया. इस साल उनका एवरेज 11 है 9 वनडे पारी के बाद. तो 25 ओडीआईज जो कि लगा इट्स अ बिग सैंपल. अगर आप 25 वनडे में केवल 2 बार 50 मार चुके हैं आपकी औसत 23 की है फिर भी टीम आपको बैक कर रही है. मेरे ख्याल से ये मुंबई इंडियंस की लॉबी चल रही है यहाँ पे. Till 2011, no one won World Cup. After that, no host lost. Now in 2023, हौसला रखो, हौसला रखो. चलो, last couple of questions because I have got to go. The AC is conked out last night. The AC installation guy is coming from Daikin in exactly 14 minutes. So I've got to go. Split coaching after the World Cup. I would love to see it, but I don't think it's happening. I agree with you. Nehra should be there, not Lakshman. No, no, no Lakshman, please. Nehra for sure. The hype created around Umran, Dravid want him to be a test bowler. Umran Malik, a test bowler. The guy's played some 5 first-class matches. Umran Malik is only and only a white ball player. ये गलत फहमी मत पालना कि वो रेड बॉल प्लेयर है कभी वो है ही नहीं. Don't you think Shikhar Dhawan was treated not well? No, no, Shikhar Dhawan is fine. यार, he's 37. Last year he had a strike rate of 71. भाई ये 90s नहीं है दोस्त, ये 2023 है. As an opener आपको 100 110 की स्ट्राइक रेट चाहिए. शिखर धवन टुक टुक खेल रहे थे. आई थिंक शिखर धवन वाज अ ग्रेट प्लेयर, सर्व द कंट्री वेल. 37 ईयर की जरूरत नहीं है भैया अभी टीम में. अच्छा हुआ उनका हो गया टाइम. थैंक यू. आप 100 देखोगे और कवर करोगे. यार 100 मैंने आज तक देखा नहीं. मैं कुछ क्रिकेट देखता हूं लेकिन मैं कहीं ना कहीं मैं एक लाइन खींचता हूं. ये 100 और T10 मुझसे नहीं होगा भाई. और कवर करना भाई मैं कवर वो करता हूं जहां से कुछ वापस भी मिलता है. मुझे T10 से कुछ मिलता नहीं है दोस्त, अगर आप मेरी बात को समझ सकते हो. जो क्लाइंट बोलता है मैं वही करता हूं भाई. Do you think India's men's team coach and captain will change if we lose the World Cup or get? It will definitely go. Rahul Dravid's contract is over after the World Cup. He's not coming back. And Rohit, if India win or don't win, he'll also leave one day. ये तो fact है. ये तो fact है. Last question. I think we overthink and comment too much on everything and everything under scanner now. We get to see day-to-day left thing, which I think makes us more possessive. Your thoughts? I agree with what you're saying, but again, we have to comment because the team does such strange things. अगर हम नहीं बोलेंगे तो चुप रहने से तो कोई तुक नहीं बनता भाई पाजी. Time to give on cricket is taking a toll on my mind. Well, all the best to you. इसी बात पर time for me to stop this stream because I have to get my AC fixed. It's bloody hot in this room right now in my studio. Love you all. Thank you for watching. Please subscribe. Please sharing the streams. मैं आपसे कल मिलता हूँ. कल आज का जो मैच है कल उसको हम रिव्यू करेंगे. Love you all. Have a great day. जय हिंद.